वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 2022 के साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का पिछले वीडियो में सेक्शन ए सेक्शन बी अपलोड की थी। इस वीडियो में सेक्शन सी के सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टूडेंट फिक्सेस ए शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन ए ड्राइंग बोर्ड using some adhesive material. She places a bar magnet in the center of it and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet using a salt sprinkler. On tapping the board gently, she observes that the iron fillings have arranged themselves in a particular pattern. Draw a diagram to show this pattern of iron fillings. Second question है, what does this pattern of iron fillings demonstrate? 14 के का सोल्यूशन डायग्राम आपके सामने दिया गया है। बी का सोल्यूशन है, दिस पैटर्न्स ऑफ आयरन फिलिंग्स डेमोन्स्ट्रेट आर एज फॉलोज। आयरन फिलिंग्स एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच दे अरेंज themselves along the direction of experienced force is maximum at poles. उसी में क्वेश्चन नंबर सी है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइंड इज कॉल्ड at a point determined using the field lines. Why do two magnetic field lines not cross each other? उसी में सेकेंड है, और करके how are the magnetic field lines of a bar magnet drawn using a small compass needle? Draw one magnetic field line each on both sides of a magnet. फर्स्ट का सोल्यूशन है, the direction of magnetic field at a point determined using the field lines by placing a compass needle on magnetic field lines. Direction of north pole will give direction of magnetic field. If they cross or intersect, it means that at the point of intersection there will be direction of two resultant fields, which is not possible. C का आंसर है, magnetic field lines are drawn by following method. Take a small bar magnet, place in the center of drawing sheet fixed on a drawing board and mark its boundary. Place a small compass needle near the north pole of magnet. South pole of the compass needle points towards the north pole. Mark the position of 2 ends of the needle. Now move the needle to a new position such that the south pole of needle occupies the position of previously occupied by the north pole, and again mark the new position of the north pole. In this way proceed step by step till you reach the south pole of the magnet. Join the points marked to get a field line. डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैकेनिज्म बाय which the sex of an individual is determined is called sex determination. In human beings, sex of newborn is genetically determined, whereas in some others it is not. There are 46-23 pairs chromosomes in human beings. Out of these, 22 pairs of control the body characters and 2 are known as sex chromosomes. The sex chromosomes are of two types, X chromosomes and Y chromosomes. At the time of fertilization, depending upon which type of male gamete fuses with the female gamete, the sex of the newborn child is decided. A है Y is a pair of sex chromosomes in human beings called a mismatched pair in terms of type and size. If the gametes always have half the number of chromosomes, then how is the original number of chromosomes stored in the organisms? Name the two animals whose sex is not genetically determined. Explain the process of their sex determination with the help of a flowchart. Only show how sex is genetically determined in human beings. इसका सोल्यूशन है, a pair of sex chromosomes in human beings called a mismatched pair in terms of a type and size because X chromosomes is a normal size and Y chromosomes is a short size. Y is a short size because the additional genes in the X chromosomes have no counterpart in the Y chromosomes. The X genes are dominant. B का सोल्यूशन है, फ्यूजन ऑफ एग विथ स्पर्म फीमेल gamete with male gamete results in the formation of zygote which restores the original number of chromosomes. C का solution है, reptiles and snails are two animals whose sex is not genetically determined. In reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animals
developing in the eggs would be a male or female. In snails, they can change their sex during their lifetime. और इसका जो फ्लो चार्ट है वो दिया गया है, एक्स वाई मेल है और एक्स फीमेल है, एक्स वाई मेल है और एक्स फीमेल है। जब इसके गेमेट्स एक्स और वाई निकलते हैं और इधर जो है एक रहता है एक्स, इधर से एक्स और इधर से एक्स दोनों जा कर के रिएक्ट करके एक्स होते हैं और इधर वाई और एक्स है वो एक्स वाई होते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ऑफ स्प्रिंग एक्स जो है फीमेल हो जाता है और एक्स वाई जो होता है मेल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसका पेपर जो है आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। थैंक यू।